Students, in the last session, I think I have started with human resource strategy and we have completed one paragraph. Introduction of human resource strategy is what I remember. Okay, basically we started with functional level strategies. Uh, in that we have already completed production strategy, which is a very lengthy answer. Then we have completed marketing strategy again, that was very lengthy answer. And then we started with HR strategy, again a very important area, a very important department of the company. And again, very important that policies in this department should be framed properly. Okay, after careful analysis is done, you should frame the policies. Now let us see how it is mentioned in the textbook. In the first paragraph that we have completed, it just said that for any country or for any nation to progress, um, it completely depends on what kind of people, what quality of people are there. It depends on its people. Okay. Similarly, for any organization also, for its survival and success. Okay, I think it's completely on how and what are the qualities of the employees. Now we will start with the areas of personal strategy. Students, before I begin with, let me just share you with this on whiteboard. Since this word is going to get repeated again and again, so I'm just sharing the whiteboard. Yeah. Okay, because this word is going to come again and again throughout the answer, it's very important that you understand the meaning. I hope the white screen is visible. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am, not now. No, ma'am. Okay. Okay, it is showing that Rishita has started screen sharing. Okay, अभी दिखेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So guys, this two words. Okay, and please do not get confused in these two words. One is personal. Personal समझते हो ना क्या है? जाति मामला. ये मेरा पर्सनल इशू है. You don't interfere. ऐसा Yes, सुना है ma'am. आपने बोलते हुए लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, this is my personal matter. कि कोई आपसे कुछ पूछता है और आप आंसर नहीं करना चाहती हो, okay? Then what do you say? It's my personal matter. Okay, ये मेरा personal issue है. So that is personal means something which is related to you. Okay, and personal, you even pronounce it as personal. Okay, personal means it is employees. Okay, when I say personal, it is employees. Okay, when we say personal strategies, that means strategies which is related to employees. All right, so personal and personal, I hope you got the difference. You even pronounce it differently. Okay, personal यानी मेरा जाति मामला, personal यानी related to employees. Okay, students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. SYBMS में कोई link share हुआ है अभी. What is it about? Who is this Balram? मैम वो आपका लिंक फॉरवर्ड है. हाँ हाँ नासिर बोलो ना क्या. मैम आपका मैम, लिंक आपकी फॉरवर्ड किया लेक्चर किसी ने. में. हाँ वो मेरा ही लिंक फॉरवर्ड कर रहा है. That is what I'm saying. He might be forwarding it to somebody else. और by mistakenly ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया उसने, है ना? Anybody who knows him? बलराम, कोई जानता है ये स्टूडेंट को? इल्ले मैम अपनी क्लास में नहीं है. अपने क्लास का नहीं है तो ये अपने ग्रुप में क्या कर रहा है फिर? ये हमारे क्लास का स्टूडेंट नहीं है बलराम. नो. नो मैम. ये तो कोई अपने क्लास का स्टूडेंट होगा. वो बलराम उसके कोई फैमिली मैम का ये एफवाई होगा. में तो नहीं था, बी डिवीजन. All right, we will just figure out. मैं एडमिट करते टाइम थोड़ा ध्यान दूंगी. सेशन में कौन कौन है अभी एक बार देख लेती हूँ.
आप भी पार्टिसिपेंट प्लीज देख सकते हो ना. Just guys, if I get busy in teaching, तो अगर आपको कोई ऐसा unknown person outsider दिखाई देगा तो आप मेरे को immediately बताना है. Okay, because what happens is when I'm teaching and if there is a admit request, I immediately admit. Okay, इतना मैं ऐसा सोचने में नहीं लगाती हूँ कि कौन होगा and all that. There's so many students, we cannot remember the name of all the students. So 1 minute. I don't think so. अभी तो सेशन में कोई भी आउटसाइडर मुझे दिख नहीं रहा है. Okay, we will see what it is. I'll move on to the answer. Guys, be alert, हाँ. When I'm teaching, एक आध बार जब भी बीच में ब्रेक होता है या पॉज होता है, वो टाइम ना पार्टिसिपेंट लिस्ट प्लीज स्क्रॉल करो और देखो कोई आउटसाइडर नहीं होना चाहिए. ऑल मैम राइट. वो 72 Yes. अपने क्लास वाला नहीं है, क्या बेटा? रोल नंबर 72. सैयद एओन. वो अभी सेशन अरे में. नहीं नहीं, वो अपना ही क्लास हाँ, सैयद आयोन एओन ऑन. अपनी क्लास के. हाँ वो अपने क्लास के है. हाँ, लेकिन उसने देखो ऑडियो कनेक्टेड नहीं किया है. मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस आई एम रिमूविंग हिम. और अब मैं रिमूव करूंगी ना, नेक्स्ट टाइम वो ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा मेरा सेशन. बट दैट्स द और आई पुट हिम इन द वेटिंग रूम. दैट्स द ओनली वे. I have noticed some students are not connecting their audios also. Okay, I'm start with the answer. We wasted so much of time. Students, I'm not downloading the image. Reason is that it takes too long और PC hang भी होने लगता है. तो read जो करेगा थोड़ा ध्यान से करना. I hope the screen is visible. Yes. यस मैम. Yes. I'll just enlarge it so that. I hope you remember ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया था. मैंने आपको उड़ता पंजाब का ये भी दिया था उस टाइम पे. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, एग्जाम्पल भी दिया था, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी. So we move ahead and we begin with various personal strategies. The very first one is recruitment and selection. I think HR students will be able to relate to this because we have completed recruitment and selection as in meaning of recruitment and meaning of selection. Okay. Marketing students might not be knowing this. So before I start with the answer, let me tell you the meaning of recruitment and meaning of selection. Recruitment means you are attracting the candidates, okay, so that they come in your company or your organization to apply for the interviews. Okay, so it is a process of attracting the candidates. Okay, like I might put advertisement in the newspaper, right? Or I might make it viral that the company is in the need of so many people, or if there is a vacancy, I might simply paste the vacancy on the public places, right? So that is recruitment, wherein you are attracting the candidates, all right? And what is selection? Selection is amongst those candidates who have come for the interview, you are selecting the most suitable candidate, okay? Putting the right person at the right job. For example, 100 people have come for the interviews. उस 100 में से जब आप सिर्फ 10 को select करते हो, तो वो process of shortlisting the candidate, conducting the interview, and finally taking on board those 10 people is called as process of selection. Okay, I hope you understood the meaning of recruitment and meaning of selection. Any difficulty Yes, here? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, all right. Okay, who is going to read this recruitment and selection strategy? Nasir, read karoge beta. Yes, ma'am. Recruitment and selection strategy. A firm needs to frame the strategy regarding the source of recruitment depending upon the nature. अरे see वो admin निखिल शिंदे को admit करने के लिए ऐसा हो. निखिल बेटा टाइम पे आओ ना, देखो बीच में प्रॉब्लम होता है फिर. हाँ, okay. The nature
jobs. For instance, a firm may consider only internal source of recruitment for lower level executives. ये भी क्या? नहीं, एक second. We'll first understand the first paragraph. Okay, now recruitment students depends upon the nature of jobs. Okay, मैंने आपको क्या बोला, रिक्रूटमेंट आप कैसे कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, या तो फिर इवन आप खाली एक वैकेंसी का पोस्टर बना के कहीं पब्लिक प्लेसेस पे भी लगा सकते हो, है ना। देखा होगा आपने, मैंने तो बहुत जगह देखा है, बस स्टॉप्स पे कभी कहाँ ऐसा वैकेंसी देयर फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना। तो वो वैसे टाइप का रिक्रूटमेंट, ओके, दैट मीन्स फॉर इफ यू नीड पीपल एट लोअर लेवल, ओके, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव जिनका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा कंपनी में, इम्पोर्टेंट एज इन दे आर समवन हु आर नॉट प्लेइंग द की पोजीशन, ओके। So lower level executives के लिए you can ask for internal recruitment. Okay, you can go ahead with internal recruitment because that is not expensive. Internal यानी आप आपके employees को बोलते हो, for example, it's my company and you all are working and I need say more 50 employees. Okay, what I do is instead of going ahead with newspaper advertisement या ये या फिर any other way which is going to be time consuming and expensive also, मैं क्या करूंगी, आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि यार आपके कोई फ्रेंड्स होंगे ना, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लो, राइट। तो आपका क्या फायदा होगा, लेकिन उसमें मैं आपको उस बेसिस पे, रेफरल बेसिस पे कुछ इंसेंटिव दूंगी। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से इफ यू गेट वन एम्प्लॉय आई विल पे यू 200 रुपीज। अभी अभी आप मोटिवेटेड हो, आप अच्छे फ्रेंड को चूज करके भेजोगे, है ना, इंटरव्यू के लिए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल, जहाँ पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट करने का, पैसा डालने का कोई जरूरत नहीं है, okay? Whereas external recruit, nature of the job, I want someone as a operational manager, process manager, department manager, ये तो की पोजीशन हो गया ना, important पोजीशन हो गया, वहां पे मेरे को बंदा करेक्ट चाहिए, है कि नहीं। I want someone who is competent, who is um, who will be able to assume the responsibilities properly, ऐसा कोई चाहिए वो position पे। So naturally I cannot go ahead with internal recruitment. I have to put up an advertisement in the newspaper, take efforts, okay, for conducting interview and selecting the candidate. तो नेचर ऑफ द जॉब के ऊपर, ओके, अभी गोदरेज और रिलायंस में भी ना कस्टमर केयर जब चाहिए होते हैं ना, तो वो लोग थोड़ी ना टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं, कि वो लोग पे पोस्ट, एंड बेसिकली वो लोग कंपनी खुद नहीं करती है, ओके, ये सब कंपनी डीएसए इसको हायर करती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज, जो कि आप लोग जिसको कॉल सेंटर्स भी बोलते हो, ओके, तो वो लोग ये एडवर्टाइजमेंट पेस्ट करते हैं। गोदरेज खुद एज अ कंपनी कभी जाके पेड़ पे चिपकाने नहीं वाला है कि ओ आई नीड 20 पीपल फॉर 20 boys to work in my company. You are not working on the payroll of Godrej, okay, you are working on the payroll of that call center. All right students, I hope you are getting me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so all right guys, so nature of the job, for jobs which are at the lower level executives, you can go ahead with internal recruitment. Okay, now we move ahead to the next paragraph. Okay, Nasir. A firm may frame strategy relating to selection procedure, including the type of tests, interviews, etc., to be conducted depending upon the nature of jobs. A firm may also have a policy for centralized selection in respect to managerial position and decentralized selection for non-managerial position. Okay, then again it applies to selection also students. अगर आप selection में strategy बनाना चाहते हो, okay, तो वो area में you have to make sure that आप carefully करो. For my HR students whom I'm teaching recruitment and selection, I've already taught them कि you have to make sure that you take the right candidate inside your company, because वो right candidate आपका अभी employee बनने वाला है ना। और आपका एम्प्लॉय कौन होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। ही कैरीज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड, हिज कंडक्ट, हिज बिहेवियर, ओके, इज एसोसिएटेड विद कंपनीज इमेज। अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ और मैं किसी
किसी एम्प्लॉय को मिलती हूँ जो रिलायंस कंपनी का है, अगर वो एम्प्लॉय बहुत कैजुअल इन नेचर है या उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मैं उस एम्प्लॉय को पॉइंट आउट, मैं तो उसका नाम तक नहीं शायद जानना चाहूंगी, है ना। मैं क्या, मेरे माइंड में क्या रहेगा, रिलायंस का एम्प्लॉय, okay, because he's wearing that ID card of a string attached to Reliance company. Okay, so I'm just giving you one example. It can be any other company also. Okay, students, you have to remember one thing: if your selection goes wrong, okay, and if you're placing wrong candidates, okay, the company's image will get affected, your work will get affected. Okay, so you have to frame the correct strategy in respect to the selection area. Okay, you can keep centralized selection for managerial positions and decentralized selection for non-managerial position. इसका भी मीनिंग बता देती हूँ। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड यानी जब मेरा हेड ऑफिस बॉम्बे में है और मेरे ब्रांचेस है ना, सूरत, बैंगलोर, ओके, कर्नाटका एंड दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में मेरे कंपनी का ब्रांचेस है, बट माय हेड ऑफिस इज इन बॉम्बे। ओके, तो मैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट की पोजीशन पे किसी को हायर करने जा रही हूँ ना, जैसे कि कोई someone who is going to be a marketing manager, someone who is going to be production manager, बड़ा बड़ा पोस्ट है वो, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन, दैट मींस द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन बॉम्बे, ओके, एंड आई विल मेक श्योर दैट हेड ऑफिस में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को के क्वालिटीज को एनालाइज किया जाए, फिर उसको बाद में आप वो अलग अलग ब्रांच में उसको शिफ्ट कर सकते हो। ओके, वाइस वर्सा, अगर आपको छोटे मोटे, अभी फॉर एग्जांपल आपको वर्कर्स चाहिए, ओके, जो आपके फैक्ट्री में काम करने वाले हैं और आपकी फैक्ट्री अलग अलग लोकेशन पे है, तो थोड़ी ना जरूरी है कि बॉम्बे में ही उनका सिलेक्शन हो। You can select a worker from the factory which is located in Delhi, वहाँ का ही वर्कर पकड़ो, फैक्ट्री which is located in Bangalore, वहाँ के ही वर्कर्स को हायर करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है बॉम्बे में सिलेक्ट करके फिर वहाँ पे भेजना, करेक्ट। So you can do decentralized selection for non-managerial position. Students, I'm very upset and there are 3 students in the waiting room at this time, 7:50, and I'm not taking them. बिकॉज मैं उनको जाऊंगी बैक पे, फिर अगेन ये पेज चला जाएगा, एंड एनीवेज 20 minutes late is not done. Okay guys, I hope there is no difficulty in this first point. No, No, ma'am. ma'am. Oh, no, ma'am. No, ma'am. Okay, students, क्योंकि ये यहाँ पे ये आया है ना, लाइक ये पर्टिकुलर पॉइंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एंड देन क्वालिटी ऑफ पीपल, रिटेंशन यानी अच्छे लोगों को रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है। कंपनी ना ये चीजें भी ध्यान दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में नासिर बहुत टैलेंटेड है, ओके, और मेरी कंपनी में महक बहुत टैलेंटेड है। आई anyhow have to make sure that these people are there in my company and they are not joining my competitors. Okay, so अच्छा, रिटेंशन का ना अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, आई कैन से, I tell you in simple words, okay, ये बिजनेस ऑफ वर्ल्ड है ना स्टूडेंट्स, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है। पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उस टाइम पे ना पीपल वांटेड टू वर्क, ओके, फॉर द बेसिक्स समझते हो आप, रोटी कपड़ा मकान। Even if the boss is abusive, I think even if the boss is beating also, the employee is going to tolerate. क्यों? क्योंकि उसको जॉब चाहिए, he wants to work, he wants to fulfill the basics like roti kapda makan. I think grandparents of today are from that generation. Okay, उनके टाइम जब वो काम करते थे तो उनका पर्पस क्या था, भाई रोटी कपड़ा मकान अपने को फुलफिल करना है, कैसा भी बॉस इज ऑलवेज राइट, is what the is what the belief was। उस टाइम पे ये माना जाता था बॉस इज ऑलवेज राइट। उसके बाद में ना स्टूडेंट्स स्लोली आईटी एंड ब्रांड्स आने लग गए, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ब्रांड्स आने लग गए। फिर वो जनरेशन एक अलग था। तो वो जनरेशन के लिए ना काम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में was to have a better standard of living. I think आपके पेरेंट्स शायद उस जनरेशन के होंगे, so that they can pay the loans and EMIs of maybe car or EMI of education loan for their children,
तो वो लोग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम करते थे। उनके अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, छोड़ देंगे जॉब। ओके, दिस इज बिकॉज उनका पर्पस रोटी कपड़ा मकान नहीं रह गया है, वो ध्यान के ग्रैंड पेरेंट्स ने दे दिया था। ओके, तो this second generation, second sort of generation during the emergence of IT and brands, okay, तो वो जनरेशन के लोगों का काम करने का पर्पस क्या था? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तो वो स्पेंड करते अपने बच्चों के एजुकेशन पे, मूवीज लेके जाना, घूमना। आई थिंक मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पेरेंट्स के एज के लोग जो है शायद वो उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स में क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? Yep. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. alright. मैंने तो बताया Yes, आपको ma'am. बिजनेस वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग जॉब क्यों करते थे? रोटी कपड़ा मकान। आईटी और ब्रांड्स डेवलप हुए, फिर लोग जॉब क्यों करते हैं? फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी का जो रेवोल्यूशनरी चेंज है ना, दिस इज अभी आईटी वाले लोग इंफॉर्मेशन की वजह से यू कैन से they had that kind of command or demand in the market. अभी तो इंफॉर्मेशन फ्रीली एक्सेसिबल है, सोशल रेवोल्यूशन हो चुका है। ओके, एंड अभी प्रेजेंट जनरेशन को मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा फॉर देयर सक्सेस और सर्वाइविंग। आईटी वालों के पास में पावरफुल वेपन था, उनके पास इंफॉर्मेशन था। अभी तो चेंज हो गया, अभी तो एवरीथिंग इज इंटरनेट एज में है हम लोग, एंड द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज इन अबंडेंस, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस। अब मुझे कोडिंग सीखना है तो मुझे कहीं कोई क्लासेस में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, वहां पे कोडिंग सीख सकती हूँ। जस्ट वन एग्जाम्पल। ओके, तो ये जनरेशन जो है ये सोशल रेवोल्यूशन के अंडर आती है। एंड देन गाइस, ये पर्टिकुलर जनरेशन के जो एम्प्लॉयज है ना, ये लोग क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है तो कंपनी को इनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। ये लोग बड़े टैलेंटेड है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा। वो फर्स्ट वाला जो था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स काम कर रहे थे, वहां पे ना अपॉर्चुनिटीज नहीं था। इसके लिए क्या करते थे, एनी हाउ even if the boss is abusive, that सुन लेते थे। you getting me, they were working under pressure also. So that was industrial revolution। कि ये सोशल रेवोल्यूशन में एम्प्लॉयज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड why I am explaining you this answer is you come in the category of social revolution। Okay, there was industrial revolution, there was IT revolution, now there is social revolution। Okay, and the social revolution में you have got multiple opportunities। Okay, in this multiple opportunities you need not be dependent on anyone। एंड आई थिंक लॉयल्टी, मैं ये नहीं बोलूंगी एम्प्लॉयज आर नॉट लॉयल, बट लॉयल्टी ये सेकंड स्टेज पे तो लॉयल्टी नहीं होता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम करते हो। ट्रूथ बी टोल्ड, फर्स्ट स्टेज में भी एम्प्लॉयज लॉयल्टी इतना कुछ ये नहीं था। सी द फैक्टर्स, लोग को काम करना है। ओके, ऐसा नहीं था कि वो लॉयल है इसीलिए वो काम कर रहे हैं, वो डर के काम कर रहे हैं और उनका घर चलाना है उनको, राइट। तो ये पूरे स्टेजेस में है ना, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू आईटी रेवोल्यूशन टू सोशल रेवोल्यूशन, employees loyalty was not there even at the first place also। Okay, so now if you're hiring people, okay, and if they're not talented, okay, then it is the company will take a decision। but if the employees are talented, okay, you have to retain them because they have got multiple opportunities। There is something in the chat box। Oh no, शेख महमूद अपने क्लास का नहीं है। शेख महमूद अपने क्लास का नहीं है। मैम है। मौजीज बेटा, आप खुद ही बहुत रेयरली लेक्चर, सभी रेगुलर हो गए हो, पहले कहाँ लेक्चर्स में रेगुलर आते थे। आपको जब नहीं पता है तो डोंट मैसेज लाइक दिस। क्या मैं पढ़ा रही थी? Thank you, ma'am. Okay, yeah, any difficulty in understanding what I gave you the explanation of a small example of the business world category? तो Nope. evolve है और भी evolve No, होगा। ma'am.
Hana. Okay. In the coming years, I think it is going to be more interesting to see and another generation working with I think more digital with digital equipments and tools, and I think it's आप लोग सब वो generation के होंगे. Okay, I think you all have to be very, very, very competent since we are learning this answer. Since it is about HR, since it is about employees, you better know this. मैं तो HR students को explain करूँगी ये सब. But then since I got a chance to even talk to the marketing students through this answer, okay, I'd like to convey to everyone, you all have to be very competent. If you are not competent, okay, it is going to be extremely difficult for you to survive, number one. But number two, if you are very talented, it is difficult for the company to retain you. आप समझ रहे हो ना मीनिंग? अगर आप बहुत talented हो तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा आपको बनाए रखना कंपनी के अंदर. और अगर आप talented नहीं हो, ये तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कंपनी में टिके रहना. Okay, in both the cases, okay, I think the second case is something that I would prefer. कि आप इतने टैलेंटेड रहो कि कंपनी के लिए मुश्किल हो जाए कि वो आपको कैसे बनाए रखे अपने कंपनी में. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स ऐसा कुछ तो दिमाग के Yes, ऊपर ma'am. से नहीं ना? Nope. Simple to understand. No, ma'am. Yes. Yeah. Yes. All right. Yes. We will just take the meaning of training strategy and then I will stop for today. Okay. All right. Nasir, Training strategy. Training is an important personal area. Training is provided not only to impart knowledge and to develop skills, but also to develop positive organization and work. There is a need to frame proper training strategy in respect of वो बाद में करते हैं, पहले just understand करते हैं meaning of training strategy. Students, training is something extremely important. You need to polish the skills of your employees, impart them knowledge, because वो जो आपके company के अंदर आए हैं on the basis of interview selection is not completely aware of your organization's culture, okay, is not completely aware of your working methods, okay, is not completely aware of job responsibilities, okay, तो वो उसको कैसे पता चलेगा? Trainings. Okay, I think most of the companies are going ahead with on the job training method. See, whether it be on the job or whether it be off the job, training तो होना चाहिए. अच्छा, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब का डिफरेंस क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी आपको पहले जॉब हाथ में दिया नहीं गया, पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ओके, फॉर फ्यू इयर्स एंड देन यू विल बी गोइंग ऑन द जॉब, okay, and then you will be doing your job. I'm sorry. And on the job training क्या होता है? काम करते करते सीखना है आपको. आप try and error करो, errors होएगा चलेगा. Try and error के basis पे you keep on learning, so that is on the job training method. Okay, so whether it be on the job, whether it be off the job, training is must, is what I want to say. It will also develop positive attitudes towards the company. मैं अगर कोई employee हूँ और मुझे कोई मेरे ऊपर स्पेंड कर रहा है ताकि मेरा स्किल्स डेवलप हो, मेरी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो, मैं बेटर परफॉर्म करूँ, so I think I will be very happy working with that company, है ना? So that is it helps to develop the positive attitude. Students, I think for today I'll stop here. I don't want to put too much into your mind. I hope you remember the answer, and it's very simple to understand. We have started with recruitment and selection, and we have now completed the meaning of training strategy. I stop here.